So the miscellaneous 11 and question number 14, and that says if the points 1, 1p and minus 3, 0, 1 are equidistant from the plane, then find the value of p. Now इस प्लेन को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया है. आर क्या होता है? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में ये प्लेन मिला. नाउ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वेयर आई पुट x, y and z as 1, 1p. And similarly distance from this point is what? Now here I put a minus 3, x का value minus 3, y is 0 and z is 1. So what will happen? I will get here on equating. क्या बोला है? दोनों equal है, distances equal है, तो magnitude ये नीचे का तो automatically दोनों का cancel हो गया. And magnitude of 20 minus 12p is equal to, ये modulus value है, distance है तो ये positive होगा. ठीक है. So magnitude of 20 minus 12p is equal to 8. तो एक बारी प्लस 8 के साथ, एक बारी माइनस 8 के साथ. क्यों? क्योंकि अगर ये आंसर मेरा नेगेटिव भी आया होता तो भी मैं प्लस लिखती यहाँ पे. सो इट माइट हैव बीन नेगेटिव, इट माइट हैव बीन पॉजिटिव. सो वी आर इक्वेटिंग इट बोथ विथ अ प्लस 8 एंड अ माइनस 8, गिविंग मी द वैल्यू ऑफ p as 1 or 7/3. The next one is the 15th one. Find the equation of a plane passing through line of intersection of two planes and parallel to x-axis. So I have kind of shown you over here. ये एक plane है और दूसरा ये green वाला plane है और एक plane is passing through the line of intersection of two planes. ठीक है. और क्या बोला है? ये plane parallel to x-axis है. तो अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं? 1, 0, 0. ठीक है. तो यहाँ से अगर प्लेन से आप नॉर्मल बनाते हो तो वो क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है. सो इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो व्हाट इज द कंडीशन टेकन? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. The normal to the plane is perpendicular to x-axis. और equation of the plane क्या होती है? r dot n is equal to d. तो ये normal होता है. Normal vector means the perpendicular vector. So therefore मैंने क्या किया? इस equation को कार्टेशियन फॉर्म में लिखा. x plus y plus z minus 1 plus lambda and 2x plus 3y minus z plus 4 is equal to 0. You could have written it in the vector form and solved. So this is plane number 1 plus lambda plane number 2. Now in the textbook and in plenty of other places you might find the plane represented by pi 1 and pi 2. Equation of the plane is ax plus by plus cz plus d. तो मैंने क्या किया? यहाँ से x को कॉमन लिया. 1 plus 2 lambda into x, 1 plus 3 lambda into y and 1 plus 1 minus lambda into z minus 1 plus 4 lambda is equal to 0. So what I am doing is I am writing it in ax plus by plus cz plus d form, ताकि मुझे पता लग जाए ये है a1, ये है b1, ये है c1. And direction ratios of x-axis are 1, 0, 0. If I put it in a1, a2, b1, b2, c1, c2 is equal to 0, that gives me lambda as minus half. Put lambda as minus half in the first equation and open it up. It will give you an equation in the Cartesian form. Convert it into the vector notation because your question was in vector, which will give you r dot and minus j plus 3k minus 6 is equal to 0. The next one, the 16th one, and that says if O is the origin and the coordinates of P are 1, 2 and minus 3, find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP. ये प्लेन जो है ये perpendicular to OP है. ठीक है. तो अगेन हमको क्या लेना है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट. ये पॉइंट दे रखा था तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म होती है. पुट
x1, y1 and z1. Now the direction ratios of the normal, इसके ये तो क्या हो गया, ये a b c अब मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 - 0, 2 - 0 एंड -3 - 0। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 1, 2, -3। So therefore put the direction ratios over here, correct, and open it up. You will get the equation in the Cartesian form as x plus 2y minus 3z minus 4 is equal to 0. So ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसके इक्वेशन में n क्या होगा, n वेक्टर क्या होगा, जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो वो है आपके पास 1, 2, -3 अगर आप इसके डायरेक्शन रेशियोज लेंगे। The 17th one, and that says find the equation of a plane which contains the line of intersection of two planes and perpendicular to the given plane. So that is p1 plus lambda p2 is equal to 0. Again I have written these two equations in Cartesian form, and then I have taken a x common, giving me 1 plus 2 lambda into x, 2 plus lambda into y, 3 minus lambda into z, minus 4 plus 5 lambda is equal to 0. So I am writing it as ax plus by plus cz plus t. अब ये जो प्लेन जो मुझे चाहिए वो किसको, इसको परपेंडिकुलर है, तो मैंने इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया ताकि मुझे क्या मिल जाए, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0, and that gives me the value of lambda as 7/19, which I put in this equation, open it up and write it back in the vector notation. ये मेरे पास सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म आया है, तो I need to write it in the vector form. The next one, and that is the 18th one, and that says find the distance of a point from the point of intersection of a line and a plane. ये plane है, ठीक है, और ये line है। अब यहाँ वाला हमको पॉइंट निकालना है ताकि हम इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकें, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन दी थी, तो एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन विल बी व्हाट, ये लाइन की इक्वेशन हमको ऐसे दे रखी है। मैंने एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया ताकि एक जनरल पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में क्या आता है, x is equal to 3 lambda plus 2 and then y is equal to 4 lambda minus 1 and z is equal to 2 lambda plus 2, ठीक है। ये जनरल फॉर्म आ गया। अब अगर ये जनरल फॉर्म है और मुझे यहाँ वाला पॉइंट चाहिए तो इसको प्लेन की इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज ओवर हियर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ये ऐसा दिया था, मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। दिस विल गिव मी लैम्डा एज 0। तो अगर यहाँ पे मैं लैम्डा को 0 कर दूं तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, 2 - 1 2, and I can simply use a distance formula to find out the distance, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square and z2 minus z1 whole square in an under root gives me 13 units. The next one is the 19th one, and that says 19th one says find the vector equation of a line passing through the point 1, 2, 3 and parallel to the planes. So again, first of all मैंने दोनों प्लेन्स को कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है, x minus x1 by a, y minus y1 by b and z minus z1 by c. So I need to find out the value of a, b, c. If this line is parallel to the plane, previously also we have discussed कि अगर ये प्लेन है और ये लाइन इसको पैरेलल है तो प्लेन के इक्वेशन होती है r डॉट n इज इक्वल टू d, वेयर दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, ये इसको परपेंडिकुलर है लाइन को, तो देयरफॉर व्हाट डू वी टेक, वी टेक a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. That's the first line. And for the second line again what do we have, a1 a2 plus b1 b2
plus C1, C2 is equal to 0, which gives me the value of A, B and C. Once I get the value of A, B, C, where do I put it? I put it in the equation of a line, ये वाली जो मैंने first mark करी है. And then my question was in vector notation, so I am writing my answer also in vector notation. I plus 2j plus 3k plus lambda and minus 3i plus 5j plus 4k. This is going to give me the position. This is going to give me the direction. Then the next one, the 20th one, and that says find the vector equation of a line passing through the point and perpendicular to the two lines. Now, if the equation of a line in Cartesian form is x minus x1 by a, y minus y1 by b and z minus z1 by c. This is my required equation. क्या बोला है? ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोल सकते हैं? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. And this, whatever is my answer, is also perpendicular to this. a1 a2 b1 b2 c1 c2 is equal to 0. So once I get two equations in ABC, I find out the value of ABC, reduce it and write this value of ABC where? Here. So this is my Cartesian form. To write it in the vector notation, r is equal to I plus 2j minus 4k plus lambda, 2i plus 3j plus 6k. The next one is the 21st one. Prove that if a plane has intercepts A, B and C and is at a distance of p units from the origin, then 1 by a square. ये आपको prove करने के लिए बोला है. Now the intercept form of the plane is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. तो equation of the plane हमने यहाँ लिखी divided by under root of a square plus b square plus c square. तो x, y, z छोड़ दो, बाकी जो बचता है वो a square plus b square plus c square. The distance from the origin is set to be p. तो x, y, z को 0 लगाया and since this is distance cannot be negative, open it up. This is p. Shift their places, swap their places and squaring both the sides, I get my required answer. And the next one is the 22nd one and it says distance between the two planes. अब हमको ये दो planes दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये दोनों आपको देख के पता लग जाएगा, these are parallel planes, ठीक है? उसका ये फॉर्मूला होता है d2 minus d1 divided by under root of a square plus b square plus c square. तो या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो या इसको 2 से डिवाइड कर लो, so that we get the same ABC. Alright, so what I have done is I have divided this by 2 so that both of them have the same ABC. And then I put a d2 minus d1 by under root of a square plus b square plus c square, giving me option D as my answer. The 23rd one is the planes. You have to find out whether these are parallel or perpendicular. तो यहाँ से देखो a1 by a2 is 2 by 5, b1 by b2 is also 2 by 5 and c1 by c2 is 2 by 5. And this one is not equal. So therefore these are parallel planes. I somehow missed out the 11th question, so I'm doing it over here. And that says, in the 11th one, find the coordinates of a point where a line through 5, 1, 6 and 3, 4, 1 crosses ZX plane. So therefore, equation of a line is x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1. Let it be equal to lambda. And I get a general point as minus 2 lambda plus 5 and y is equal to 3 lambda plus 1 and z is equal to minus 5 lambda plus 6. Now what does it say? It says it crosses the ZX plane. अगर ZX plane को cross कर रही है तो y coordinate हमारे पास 0 हो जाएगा and this is going to give you lambda is equal to minus 1 by 3. If you get lambda as minus 1 by 3, what do? We put lambda over here
So I get minus 2 into minus 1 by 3 and plus 5, and here as well minus 5 into minus 1 by 3 and plus 6, giving me the value of x, y and z as 17 by 3, and y of course is 0, and this is a 23 by 3. We have a 6 3s are 18 and plus 5 23 by 3.